वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Will you check our final papers? ये कौन है भाई? Will you check our final papers? Okay. May I know who this is? Please check WhatsApp. चलो स्ट्रीम के बाद ठीक है. Mixer 902. I have already checked your final papers, बेटा. चेक भी कर दिए, मार्क्स भी दे दिए. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम ज़ैनब. I'm good, alhamdulillah. Walaikum salam, love from Pakistan. I'm good, how are you? What's the highest? Highest is highest perfect score. Why the change of plans? Well, a lot of people had requested for yearly papers, so, and if you remember the poll that I had on my Instagram, where a lot of people, in fact, I think people who wanted me to do a difficult yearly past paper were around like 70 something %, and the rest were like, I mean, the minus 100 में से. So yeah. Hello Ali. So which one is most difficult topic? That depends on you entirely. Some people find geometry difficult, some people find something else difficult. So ये तो आप पे depend करता है. You can't just say कि ये topic मुश्किल है. It depends on you entirely. सही क्या अली. अभी मैथ की क्लास हम रखेंगे. We'll connect after my stream inshallah. Everyone's saying mensuration is gonna kill you. अभी तक किया ही नहीं. Yes, graphs of functions की हम रखेंगे extreme. Don't worry. Sir, अगर graphical solutions P1 में आ गया, so will it not come in P2? I've been getting this question a lot. देखो, graphs of functions is one of those topics that the concepts of which are just sort of spread out, okay? They're all over the place, ठीक है?
So even if it has been tested in paper 1, that means it's still likely that there are a lot of concepts of paper 1. मुझे बताओ paper 1 में tangent बनाने को ये आया था paper 1 में कि tangent बना के gradient निकालो. I'm sure ये वाला concept तो नहीं आया था ना, because paper 1 you can't do that without a calculator. So that means there's still a bunch of it that's left. Or you know what can happen? जो paper 1 में आना था tangent बना के gradient, you had to make a tangent and find out the gradient. Is that true? ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया. Okay. अच्छा चलो ठीक है. So even if that topic did come, you know what can be done? What can be done is जो paper 1 वाला graphs of functions है ना, you know when you're given like multiple sorts of graphs, one is a quadratic, one is a cubic. So what can happen is okay, maybe it can test you on one of those questions. ठीक है, so that is still on. So yeah, and we have practiced that. मैंने कब किया है? मैंने graphs of functions paper 1 कि I think मैंने stream रखी थी graphs of functions paper 1 की शायद मैंने stream रखी थी. I do remember doing such questions. I don't know when exactly, but I do remember मैंने कुछ किया था. That was the first part of the question. Second was that we were given a cubic equation, we were to give it solutions. Yes. हाँ ये तो मुझे ये तो I remember, but I didn't remember. I don't know that tangent part also came. खैर, anyway. Yes, tracing paper allowed होगा, don't worry about that. Even if it's not allowed, even let's say you have like a new examiner or examiner today, if you have like a new invigilator, you guys know what to say. Politely tell them, politely please, no need to be harsh or anything, कि please question paper के front page पे देख लें. It clearly states that tracing paper may be used, so I'm sure they'll change their mind. ठीक है, इसमें इतना irrational होने की ज़रूरत ही नहीं है. Okay, so Charlie, let's start. Let's get to work. Let's get down to business. Okay, अच्छा वो मैंने important topics वाली video बना दी है, ठीक है. So you guys can watch that, ठीक है. And yeah, I'd appreciate if all of you would like the stream. That would mean a lot. And do subscribe if you haven't yet. If P1 had P2 pattern, then shouldn't P2 be based on P1 pattern? Well, maybe it is, maybe it's not. Okay, it's not, it's difficult to say that. Okay, but yeah, one thing that I will say is topics such as transformation, topics such as kinematics, matrices, ये for sure, I mean I'm 95% sure कि ये paper 1 में आ पाएंगे. ठीक है, okay, so do prepare accordingly guys. ठीक है, चलें, let's get to work. ठीक है, so we have as you guys know, आज का agenda मैंने थोड़ा सा change किया. Amar creating new accounts to increase. Thank you, Amar. I say you shouldn't be doing that. You should be focusing on studies. Okay. How many past papers do you recommend? The more the better. The more the better, given that you're getting a good decent score every time. Okay. Statistics भी आएगा. Yeah, statistics, like I said, is spread out. It's all over the place. So even if it's tested in P1, watch the video. Video में मैंने सब बताया कि बहुत सारे ऐसे topics हैं जिनके concepts काफ़ी spread out हैं. तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट डाउन टू स्टेटिस्टिक्स, इट्स ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा. ठीक है, इवन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे पढ़ के जाना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बीच में आ जाता है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बीच में आ जाता है, मेंसुरेशन के बीच में आ जाता है. ठीक है, यू डोंट नो दैट. Yes, if you're getting good grades in the 5 years of past papers that you're solving, then yeah, that should be enough. ठीक है, anyway, chalo, let's get to work. So it says here, as you guys know, we're solving October-November 2019, paper 2, variant 1. Okay, I posted the threshold of this, लेकिन just to give you guys an idea कि इसका threshold क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So basically, इसका threshold A, I think, was on, let me check, 2019, paper 2, variant 1. Okay, 67 out of 100 was A, okay, and 50 out of 100 for B. Okay, so yeah, that's the case. Okay, chalo, let's get to work.
So question number 1 says Nima travels on a business trip. ठीक है. The total cost of her flight is $406 including tax. The cost of the flight excluding tax is $350. Calculate the tax as a percentage of 350. Okay. So just remember one thing. I'll quickly explain this concept to you guys on this on the side over here. Whenever you're asked to express one quantity as a percentage of another, one quantity as a percentage of another. So the way to do that is, just remember this, is या as upon of times 100. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? अब ये देखने में तो थोड़ा weird लगेगा, but it's actually very simple. Okay, whatever value that you have with the term as, okay, that means that's going to come in the numerator. So whatever the tax is, we'll work it out. Tax is going to come in the numerator. Whatever value that you have with the word of, that's 350, that's going to come in the denominator, and you're going to multiply that by 100. Okay, so we'll have to work out the tax first. Okay, tax हम कैसे निकालेंगे? Tax is going to be equal to 406 minus 350. So 406 minus 350, so that's 56. Okay, so that means 56 upon 350 times 100. So divide by 350 times 100. Yep, 16% it is. So 16% is our answer. Walaikum salam, walaikum salam. Part B. Part B says, Nima takes a suitcase with mass 15.5 kilograms, correct to the nearest 0.5 kilograms. Okay. She also takes 6 packets, each with mass to 1.2 kg, correct to the nearest 0.1 kg. Okay. She has a luggage limit of exactly 23 kilograms for the flight. Can Nima be certain that the mass of her luggage is below the limit? Okay. So in order to be certain, हम कौन से bounds लेके check करेंगे? Okay. What bounds are we going to take and check to make sure that it's less than 23? What are we going to do? Are we going to take the upper bound or are we going to take the lower bound? Walaikum salam. What do you guys suggest? Upper bound, yes. If you want to be certain that basically the mass is less than the limit, okay, that means you will think of the maximum possible. Okay, so that way you will be certain that your luggage is below the limit. Okay. अच्छा, अब एक काम करते हैं, on the side let's work out the upper bound for both. So 15.5 is correct to the nearest 0.5, so let's divide 0.5 by 2, that's 0.25. Add करेंगे तो 15.75 हो जाएगा, लेस करेंगे तो 15.25 हो जाएगा. खैर, अच्छा, फिर let's do the same for the 6 packets that she's talking about. 1.2 kg for one, correct to the nearest 0.1 kg, that means 0.05. ठीक है, ऐड करते हैं तो 1.25 हो जाएगा, लेस करेंगे तो 1.15 हो जाएगा. ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव द स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी क्वेश्चंस. ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है. 15.75 and 1.25 are the bounds that we're going to take. So basically 15.75 plus 6 times of 1.25. So let's work this out. 15.75 plus 6 times of 1.25. So what do we get? We get 23.25 kilograms. अब मुझे बताओ, what answer are we going to give over here? क्या conclusion draw करेंगे हम by this answer? No. Okay. So basically the answer is no. Okay, she can't be certain as the limit is 23 kg. Okay, no need to write like a story. Okay, just keep it simple, short and to the point, and that should be enough. Okay. Part C. Let's see what part C says. Part C says Nima changes $245 to euros for the trip. The exchange rate is $1, which is equal to 0.73 euros. On the trip, she spends 124 euros when she returns. अच्छा, ये बड़े स्टैंडर्ड से सवाल हैं. ठीक है, ये आपको इस साल नहीं, आपको काफ़ी सालों में मिलेंगे कि भाई कोई ट्रिप पे जा रहा है. ठीक है,
और सवाल शुरू होता है मे बी टाइम से रिलेटेड. यस साद यू कैन प्रैक्टिस IGCSE क्वेश्चंस. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन यू कैन. आई थिंक मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी यही जवाब दिया था. यू कैन टोटली डू दैट. ठीक है. कैन वी से द लिमिट इज़ लेस देन द वेट? या ऑफ कोर्स वी कैन से दैट. ठीक है. अच्छा, सो इनको करने का भी बड़ा एक स्टैंडर्ड सा तरीका है कि आप पहले कन्वर्ट करें डॉलर्स को यूरोज़ में. $1 इज़ बेसिकली इक्वल टू 0.73. ठीक है. 245 के कितने मिलेंगे? x. सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई 245 into 0.73. So what are you looking at? You're looking at 178.85. ठीक है, इसको प्लीज़ राउंड ऑफ नहीं करना. ठीक है, पहली बात इट्स एन एग्जैक्ट आंसर. सही है. दूसरी बात, currency is always given corrected to decimal places. ठीक है. Saad, both the videos of permutation and combination are uploaded. Okay, go in the playlist where it says add math live streams, उधर आपको मिल जाएगा. ठीक है. Okay, so 178.85 में से she is spending 124. ठीक है. So 178.85 में से let's subtract 124. So now we have 54.85. Okay, so this is the amount that's left. ठीक है. Now when she is coming back to the US, obviously euros किसी काम के नहीं है, so she needs to exchange them back to dollars. But this time the rate has changed. $1 is basically equal to 0.76 euros. Sorry. And how many euros does she have? She has 54.85, for which she's going to get x dollars. Let's cross multiply. So 0.76x is equals to 54.85. Let's divide 54.85 by 0.76. What do we get? We get 72.17. अब इसको जब हम correct to the nearest dollar करेंगे, so that means this is going to be $72. Sir, when will you do Add Maths past paper live? Add Maths past paper live. But अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं. ठीक है. I really haven't made a schedule or something. ठीक है. Sir, why does the mensuration live stream say deleted stream? I've uploaded that video. I've uploaded that stream as a separate video. ठीक है. That's because that video got deleted. Okay, that stream got deleted. YouTube में कोई मसला हो गया था. I don't know. ठीक है. But that's why I did what I did. Anyway. Okay. So yeah, I'll quickly explain this question again. साथ में अभी चेक करके बता दूंगा. ठीक है. So it says she's basically taking $245. She's converting 245 euros for the dollars. ठीक है, उसको यूरोस में कन्वर्ट कर रही है. So $1 0.73, 245 के कितने मिलेंगे? 178.85. Now ट्रिप पे she has spent 124, so we're going to deduct that. So 54.85 is the leftover amount, which of course she's going to convert back into euros. How? This time this is the exchange rate. Okay, $1 gives you 0.76. 54.85 will give you x. Cross multiply. That's it. Answer आ गया. Sir, why answer is 72? Why you round it up? Better read the question. एक तो यही होता है, you guys don't read the question carefully, और फिर later on you realize that you didn't give your answer correctly. ठीक है. Please read the question, and whatever it is that you find important in the question, make sure to underline it, highlight it, whatever, so that you remember कि आपने क्या करना है. ठीक है. Okay, part D. Part D says, on her next trip, Nima hires a car. She drives a total of 657 kilometers in the car. The car uses fuel at a rate of 4.3 liters per 100 kilometers. ठीक है. Nima pays $1.29 per liter of fuel. Calculate the amount she spends on fuel during the trip. Okay. Yes, please make sure, Amar, that's a good strategy. Read the question 3 times for in paper 2. ठीक है. अच्छा, let's do this question. So she's driving 657 kilometers. अब fuel जो है, so basically let's set up a proportion over here, liters and kilometer. So the car takes 4.3 liters every 100 kilometers. ठीक है. Now she's going to drive 657 kilometers. So how many liters is that going to take? Let's find out. Cross multiply. So 657 into 4.3 divided by 100. So x is equals to 28.251. Okay, x is equals to 28.251. Okay. Now the question says that Nima pays $1.29 per liter of fuel. Okay, so that means for 1 liter, she's paying 1.29. ठीक है.
Now she needs 28.251, जिसके लिए she's gonna pay x, cross multiply. So what is x equal to? 28.251 into 1.29, and there you go. That's it. That's your answer. अच्छा, हमारा आंसर आ रहा है 36.44. ठीक है. So 36.44 is the amount, since it's a dollar value. So remember, all dollar values are given correct to 2 decimal places. 36.44 is going to be our answer. ठीक है. Thank you, Hussain Mustafa, for sharing the link. ठीक है. अच्छा, part E. Part E says Nima stays in a hotel for 7 nights. This is a hotel bill. Notice how एक ही character के around पूरा question revolve कर रहा है. ठीक है. And this is what happens usually. Usually an everyday math question revolves around just one character. ठीक है. वो trip पे जाता है, trip पे खाना भी खाता है, trip पे जो है वो गाड़ी भी चलाता है, and that's how the whole question is structured. ठीक है. फिर अक्सर जो है वो उसी trip का जो है वो flight से भी related question होता है. So that's how it goes about. Okay. I'm good, Hassan. How are you? Okay. So part E says Nima stays in a hotel for 7 nights. This is her total bill. Okay. ज़रा इसको स्टडी करते हैं. 7 nights at $x per night, 805. तो ये तो बड़ा आपका सिंपल होगा. 805 टोटल पड़ा है ना. 805 को डिवाइड कर दो 7 से, तो फिर आपके पास एक रात की कॉस्ट आ जाएगी. 805 डिवाइड बाई 7. हाँ, नीमा काफ़ी अमीर है अपेरेंटली. 115. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये दैट वी हैव टू अननोन्स ओवर हियर ऑल्सो वी हैव एन अननोन. दैट मीन्स अब वील हैव टू sort of work backwards. Okay, now how exactly are we going to work backwards? By reading this. So basically this is the total bill, which includes a tax of 6.5%. So that means percentage terms में अगर हम बात करें, so in percentage terms this is basically 106.5. okay, and that is equal to what? That is equal to 996.84. okay. Why 106.5? Please make sure you guys read the question carefully, because it says including tax. और प्लीज़ ये मत करना कभी कि इसका 6.5% निकाला और उसको उसमें से माइनस कर दिया. ठीक है. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू कांट बी मोर रॉन्ग देन दैट. ठीक है. परसेंटेज में दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग बैकवर्ड्स. इट्स नॉट लाइक यू कैन कैलकुलेट 6.5% ऑफ दिस, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके. सो 100 पे x, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, सी व्हाट वी गेट. 996.84 टाइम्स 100 divided by 106.5. मैं ये directly कर रहा हूँ. Okay, I'm just skipping a few steps. So x turns out to be $936. So what is the total before the tax? Total before the tax is 936. Okay. अच्छा, अब इससे क्या हुआ? इससे ज़रा हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया. कैसे फ़ायदा हो गया? We now can work out this part. Okay. So 805 plus x, इसको x कह देते हैं, is equals to 936. So what is x equal to? 936 minus 805. Okay, so that's equal to 131. So x is equals to 131. Okay, now things are under control. वो कैसे? 4 dinners at $x each. So all we have to do is 131 divided by 4. Let's see what do we get. That's 32.75. 32.75. Yep, that's correct. I will encourage you guys to solve the question as we go along. ठीक है. अच्छा, आप लोगों की भी practice हो जाएगी. We'll make the session interactive. Sir, what if our preparation is really weak till now? Then better do something about it. I mean, you can't just sit. I mean, you can't just not do anything about it. Sir, do we necessarily have to remember the compound interest formula because similar to constant? Yeah, reducing balance is similar. है ना? हाँ, ठीक है. It's okay. You don't have to memorize like the way it is. Okay. Okay, question number 2. Let's see what question number 2 says. Statistics. Statistics पे please expect करो कि statistics का question भी आएगा in paper 2. ठीक है, very likely. So 2.A says one afternoon there were 200 visitors to a library. ठीक है. The table summarizes the time in minutes each visitor spent in the library. ठीक है. On the grid draw a histogram to represent this data. ठीक है. Okay, so histogram बनाना है, 3 marks for that. I think that's a pretty good deal. So make sure कि histogram में कि y axis पे क्या है? Y axis पे frequency density है. ठीक है. Okay, so how do you calculate frequency density? Question for you guys.
How do you calculate frequency density? चलो आपने तो मुझे डायरेक्ट आंसर दे दिया, बट माई क्वेश्चन वॉज या फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इज हाउ यू वर्क आउट, ठीक है. ओके, सो 26 अपॉन 20, ठीक है. अच्छा, ये मैं ऊपर क्लास विड्थ लिख रहा हूँ. 20 माइनस 20 इज 20, 40 माइनस 20 is also 20, 60 minus 40 is also 20, 90 minus 60 is 30, 180 minus 90 is 90, ठीक है. So 26 upon 20, 26 divided by 20 is going to be 1.3, ठीक है. 76 divided by 20 is going to be 3.8, 56 divided by 20, ठीक है. आराम आराम से करना है आपने, कोई जल्दी नहीं करनी है. 2.5 hours is more than enough time, ठीक है. 24 divided by 30 is 0.8, 18 divided by 90. It's more than enough time given that you guys are practicing and timing yourself when you're solving these questions. I mean, full length past papers at home. ठीक है. अच्छा, अब देखो. First thing you should do is you should get familiar with your scale. अच्छा, अब as far as the scale goes, well, as far as the scale goes, on the x-axis we can see that it's basically 20 divided by 5, which is equal to 4. ठीक है, लेकिन that's really not going to help us. It's basically the y-axis that we're concerned. अच्छा, y-axis में the max that we are going is 3.8. Okay, so here's 1, here's 2, here's 3, here's 4. ठीक है. अच्छा, so the frequency density for the first one is basically 1.3 और ये जा रहा है 0 से लेके 20 तक. Okay, so 0 से लेके 20 तक 1.3 का मतलब है कि ये आ गया हमारा 1.3 का मतलब 3 small boxes above 1. Why? Because what the scale that we have over here is such that, actually just a second, I'm just going to exit the app and open it again. Just going to take like 30 seconds. Sometimes the pencil stops responding. Okay, back. Yeah, so basically you have 10 small boxes, okay, for 1 unit. So 1 upon 10 is 0.1. ठीक है. Yeah, these are definitely free marks. These are free marks. I mean, देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखने के मार्क्स हैं. Yeah, frequency density axis is not numbered, so it's okay. You can number it yourself. ठीक है. And then you have 3.8. 3.8 है 20 से लेके 40 तक. Okay, so 3.8 is from 20 to 40. There you go. Please make sure that you guys use a pencil for this. Okay. Every year I hear students say कि सर हमने पेन से बना दिया था, फिर गलत हो गया, तो अब क्या करें, फिर हमने वो सेपरेटली पेज पे बना दिया. ठीक है, not recommended. Okay, don't play with fire. 40 to 60 is 2.8. 40 to 60 is 2.8. ठीक है. 60 to 90 is 0.8. 60 to 90 is 0.8. So 90 कहाँ पे होगा? 90 होगा बिल्कुल 80 और 100 के बीच में. ठीक है. No, you don't have to shade the bars. Who said you have to shade the bars? Okay. And then you have finally 90 to 180, which is 0.2. Okay, so 90 to 180 is 0.2 का मतलब कि बहुत ही कोई छोटा सा बार बनेगा हाइट में. ठीक है, but yeah, this is it. Okay, that's it. We're done with frequency density. Okay. Then it says work out the percentage of these visitors who spent more than 40 minutes in the library. So please, when you're reading the question, make sure to underline the word more. ठीक है. More than what? More than 40 minutes in the library. ठीक है. अब more than 40 minutes वाले कौन कौन हैं, ज़रा ये देख लेते हैं. More than 40 minutes वाले आपके पास 56, 24 and 18. ठीक है. So let's sum them up. 56 plus 24 plus 18 divided by the total. Total usually is given in the question. Yeah, it's given. That's great. It's given in the question as 200. ठीक है. Into 100. Okay. So let's work this out. 56 plus 24 plus 18. 98 over 200 into 100. So 98 divided by 200 into 100, that's 49%. There you go. Easy work. Okay, easy work. Sir, I am confused.
What are you confused about, Zainab? That's how the last bar is most of the time. Yeah, you're right. That's how the last bar is most of the time. See, अगर आप लोग खुद ही इतने पेपर्स प्रैक्टिस करो ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. आपको गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. You can probably figure them out on your own. I have never seen such a bar before so wide. Okay. Yes, Saad, what is your question? चलें आप लोग इतने क्या the app is PDF expert, just by the way. ठीक है. So another statistics question. I mean, although it's the same question, but you can see that there's a different concept. ठीक है. Let's see what it says. It says Mario recorded the number of books borrowed by each. Why did we found the upper bound? Wasn't it already given in the question? No. Upper bound was not already given in the question. Upper bound तो हमने निकाला था. Go back to the question. देखो upper bound तो हमने निकाला है. ठीक है. Upper bound हमने इसलिए निकाला है in order to make sure कि जो maximum है, in order to find out what the maximum possible weight could be, and since the maximum possible weight was exceeded the limit, so that means जो भी था वो possible नहीं था. ठीक है. Sir, does the histogram represent how the frequency is spread across the units? Yeah, that's what a histogram represents basically. Sir, graphs of function की stream करेंगे later on. Yeah, hopefully inshallah. How did we plot the bar? बेटा frequency density निकाली. Okay, scale दिया 1 2 3 4. ठीक है. Frequency density कैसे निकालते हैं? Frequency upon class width. Frequency upon class width. Class width क्या होता है? ये higher value minus the lower value. Okay, and that's it. I have a video on histogram. Go watch it. उसमें clear हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, find the median. So whenever you have questions like these, finding out the median can be slightly tricky. Okay. So basically, the formula that we use for median is n plus 1 upon 2. So that means 200 plus 1 is going to be 201. 201 divided by 2 means 100.5. ठीक है. So 201 divided by 2 is 100.5. अच्छा, अब 100.5 अगर हमारा median है, okay. If 100.5 is the median, that means we're going to start adding our frequencies. Okay, so here's 17, and then 17 plus 47, that's 64, and then 64 plus 42, okay, that's 106. So basically we're going to see where do we cross 100. Okay, so we crossed 100 in this box. Okay, and what are the number of books in this box? The number of books are 2, so that means 2 is going to be our median. अच्छा, अब ये बहुत सारे लोगों को ना समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस टू देम. सो इट विल मेक सेंस वंस यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये डेटा जो है हमारे पास, ये डेटा जो है ये पहले किस तरह से था. ठीक है, ये पहले बेसिकली इस तरह से था कि 0 occurred a total of 17 times. Obviously I'm not going to write it 17 times. ठीक है. Why did we do n plus 1? Well, that's the formula. Whenever you have scattered data or whenever you have like a frequency table, that's the formula we use. When we have cumulative frequency, then we just do 50% of the total frequency. Okay? And 1 is occurring 47 times. Okay? And then 2 is occurring a total of 42 times. Okay? So like I said, I'm not going to write the whole thing down, but this is how it is. Okay? So basically, this means that 1 से लेके 17 terms are all 0, and then 17 के बाद क्या आता है 18. 18 से लेके 64 टर्म्स जो हैं आपकी वो सारी क्या हैं, वो 1 है. एंड देन 65 से लेके, बिकॉज दैट्स व्हाट कम्स आफ्टर 64, 106th टर्म, ये सारी किसके बराबर हैं, ये सारी 2 के बराबर हैं. सो if you figured out that 100.5 is the median, that means we're going to take the average of the 100th and the 101st term and divide by 2. So 100 term भी 2 है, 101st term भी 2 है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर 2 आएगा. ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रिडंडेंट है. ठीक है, नॉट नेसेसरी, यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. ठीक है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द मीडियन, स्टार्ट काउंटिंग एंड सी कि किस बॉक्स में यू आर क्रॉसिंग द वैल्यू ऑफ द मीडियन. ठीक है. अच्छा, मीन निकालना है. अगेन फ्री के मार्क्स. मीन के लिए वी विल डू 0 into 17. In fact, let's write it 17 into 0. Sigma fx upon sigma f, ठीक है, is equals to 17 times 0 plus 47 times 1 plus 42 times 2
plus 28 times 3. Can someone work this out on the side? इससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कैलकुलेशन है. इसमें फजूल में फिर हम टाइम ज़ाया करेंगे and then we'll be able to solve. I mean, we'll get more done in less time. Yeah, if someone has opened the marking scheme of this question, direct answer देख के बता दे. 526 upon 200. Thank you. 526 upon 200 क्या होगा? 526 upon 200. 2.63. ठीक है. Thank you. Time बच गया हमारा. Okay. Part 3. Part 3 says one of the visitors is selected at random. ठीक है. Find the probability that this visitor borrowed more than 4 books, sorry. More than 4 books. ठीक है. So if I were you doing the exam, I would immediately underline or highlight more and the word 4. So more than 4 books कौन कौन है? ये 21 है और ये 13 है. So 21 plus 13 upon 200. Okay. So 21 plus 13 divided by 200 is 17 upon 100. Sir, I will score approximately 65. Oh, मैंने इस सिनारियो पे ना मैंने एक मीम बनाया था. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था. ठीक है. देखो बेटा, whoever you are, even if I tell you how much you need to score, क्या गारंटी है कि आप वो मार्क स्कोर कर लोगे? ठीक है. I mean, I'm sure you must have set yourself a target in paper 1 also, right? But maybe you achieved that target, maybe you didn't. Okay? So there's no guarantee that even if I tell you how much you need to score, okay, in order to get an A star, that you will get those marks. Okay? I mean, I hope you do. My prayers are with you. Okay? But the thing is, don't set yourself targets like these. I mean, you're setting yourself a target for something you don't even know. Okay? So just work hard and do as well as you can. Simple. ठीक है. तो ये प्रैक्टिकल टारगेट्स नहीं है कि मुझे इतना स्कोर करना है. ठीक है. एग्जामिनर आपके हिसाब से थोड़ी पेपर बनाएगा. जस्ट डू एज वेल एज यू कैन. दैट्स इट. एवरीथिंग एल्स विल जस्ट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ओके. ओके. नाउ सो बेसिकली ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर अभी थोड़ी देर बाद कोई और भी ये सवाल पूछ रहा होगा, बट चलो खैर कोई बात नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के two of the visitors are selected at random. Find the probability that only one of them borrowed 6 books. Give your answer as a decimal correct to 4 significant figures. Okay, so if question has given you a condition, then you need to give your answer. I mean, you need to follow that. Okay. Okay. So calculate the probability that only one of them borrowed 6 books. Okay. So 6 books वाले ज़रा देख लेते हैं कितने. 6 books वाले हैं आपका 13. So that means 13 over 200 into बाकी दूसरा जो होगा वो क्या होगा? वो होगा not 6 books. That means वो क्या हो सकता है? वो 1 से लेके 5 तक सारे हो सकते हैं. ठीक है. That means वो ये सारे हो सकते हैं. ठीक है. Okay. So how exactly are we going to work this out? 200 minus 13. So what do we get? We get 187. But remember that the denominator is now going to decrease by 1. ठीक है. अच्छा, अब एक काम हम और ये करेंगे कि हम इसको टाइम्स 2 करेंगे. ठीक है. अब इसके टाइम्स 2 के पीछे क्या लॉजिक है? What is the logic behind this times 2? So ये आ रहा है हमारा 2431 over 39,800. ठीक है. Which turns out to be 0.01608. तो हम इसको 0.0161 कर लेंगे. अच्छा. Okay. So the logic behind times 2 is कि देखो, it says only one of them borrowed 6 books. ठीक है. हाँ, हम दोनों की probabilities को ऐड भी कर सकते हैं. Yes. So basically it doesn't tell you which one. It doesn't tell you the first one or the second one. ठीक है. So basically there are 2 visitors, right? Visitor 1, visitor 2. Let's say कि एक के पास 6 हैं. ठीक है. और एक के पास not 6. ठीक है. That means 1 से लेके 5 तक कुछ भी है. Or it's possible कि visitor 1 did not borrow 6 books. ठीक है. But visitor 2 borrowed 6 books. Okay. So that means we can find out the probability of 1 and times it by 2. Okay. Or what we can do is we can find out one probability and then the other और फिर दोनों को ऐड कर दें. ठीक है. क्योंकि सिनारियो में दोनों probabilities सेम होंगी तो हम इसको टाइम्स 2 भी कर सकते हैं. ठीक है. So either way our answer is 0.0161. ठीक है.
Make sure to please follow the condition that the question has assigned you. ठीक है. Okay, I'll repeat. So basically what has happened is that only one of them borrowed 6 books. So एक के पास 6 हो सकती हैं, हो सकता है दूसरे के पास 6 ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है पहले के वाले के पास 6 ना हो, दूसरे वाले के पास 6 हो. 6 की probability 13/200 है and not 6 की probability 187/99 है. ठीक है. It is 4 significant figures. Oh wait, you're right, it is not 4 significant figures because 0.0 है, you're right. तो ये हो जाएगा 0.01608. Yeah, you're right. So basically ये आपके 4 significant figures हैं. Thank you Aziz. Thank you for pointing out. Okay. I just did repeat beta. I just did repeat. दोबारा बता देता हूँ one last time. Okay. So basically पहले वाले के पास 6, दूसरे वाले के पास not 6, ठीक है. और it's possible कि पहले वाले के पास 6 नहीं है तो दूसरे वाले के पास 6 है, ठीक है. तो दोनों की एक की probability निकालो times 2 कर लो, या दोनों की probability निकाल के दोनों को ऐड कर दो, ठीक है. अच्छा 0.0221 आ रहा है आंसर. Is that correct? Is that the answer? 0.0221. ओके हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया. ठहरो. 187 over 199. ओके सॉरी, आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. माय बैड. मैं आप लोगों से तो कह रहा हूँ आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. यू राइट, द आंसर इज 0.1221 नहीं होगा, 1222 हो जाएगा. सॉरी, फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. ठीक है. I'll just do it over here. Times 2 and there you go, 0.1222. ठीक है. Okay, thank you for pointing out the error. So yeah. Okay, next question is question number 3. It says, ये सवाल वैसे जब I think हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रीम कर रहे थे, we did a question similar to this. Okay, but anyway let's do it again. It's fine. So this question says, describe fully the enlargement that maps shape A onto shape B. अच्छा देखो. Now one thing that I want you guys to understand over here, since transformation is very likely to come in paper 2, okay, if the question had used the word transformation, you know, this would have been of 3 marks. Okay, why? Because you would have then had to describe the transformation also, but because the question had already told you it's enlargement, that's why it's 2 marks. Okay, now what do you define enlargement by? 2 things: the center, okay, and the scale factor. How do we find out the center? Let's see. Center is worked out by basically connecting the corresponding point of the object with its image and extending it. ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, फिजिक्स में भी इससे एक मिलता जुलता टॉपिक होता है ना, इफ़ आई रिमेंबर. क्या, आई थिंक इट्स लेंसेज और समथिंग लाइक दैट. लेंसेज में भी मुझे याद है इस तरह की कोई चीज़ होती थी. या मेक श्योर टू एक्सटेंड द लाइन्स. ठीक है, सिर्फ ज्वाइन करके ना इंतज़ार करना कि इंटरसेक्ट करें. ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू एक्सटेंड द लाइन. सो द सेंटर इज 7,1. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द स्केल फैक्टर? स्केल फैक्टर के लिए देखो, रिमेंबर बी इज़ द इमेज. सही है. सो लेट्स टेक दिस लेंथ इज़ 2 एंड लेट्स टेक दिस लेंथ, दिस इज़ 1. ठीक है. सो व्हाट डू? वी टेक द इमेज लेंथ डिवाइड बाय द ऑब्जेक्ट, सो द स्केल फैक्टर इज़ 2. ठीक है. There you go, that's it. Acha, part B, which says shape A is mapped onto shape C by a rotation of 90-degree clockwise rotation. ठीक है. Center is 1,0. So सबसे पहले तो center mark कर लेते हैं. Please 1,0. Remember, x is 1 and y is 0. Okay, you don't want to end up rounding, considering this point as 1,0. ठीक है. 1,0 means x is 1, y is 0. ठीक है. 199 क्यों हुआ? ओके, आई थिंक हमसे पुराना सवाल पूछ रहे हैं. 199 इसलिए क्योंकि टोटल में से एक कम हो गया. ठीक है. ओके, सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, सेंटर इज 1,0. किसको रोटेट करना है? शेप ए को रोटेट करना है. सो दिस आई एम गोना डू विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट कलर एंड दैट्स ग्रीन. ठीक है. अच्छा, अब देखो 2 पॉइंट्स को तो रोटेट करना बहुत आसान है. और कैसे रोटेट करना है? क्लॉकवाइज रोटेट करना है. सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू स्पिन एंड कम ओवर हियर समवेयर. ठीक है. So let's rotate
this point is 2 units above, तो ये 90 डिग्री clockwise rotate करोगे तो कहाँ जाएगा? It's gonna come 2 units to the right. ठीक है, इसको mark कर देते हैं. And then let's rotate this point is 3 units above, let's spin this 90 डिग्री clockwise, तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब बाकी पॉइंट्स के लिए we will have to work hard. ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखो. So let's take this point. ठीक है, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट. अब ये वाला पॉइंट from the center is 2 units up and 1 unit to the right. Okay, it's 2 units up and 1 unit to the right. That means if you spin this, so it's going to go 2 units to the right and 1 down. तो ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको erase कर रहा हूँ. Please, when you're doing transformation, it's very important to do it with a cool head. ठीक है, no need to rush. कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे. Take as much time as you want. I mean, metaphorically speaking, of course. As much time as you want का मतलब कि तसल्ली से करें. अच्छा, then I'm going to be doing this point. Okay, pay close attention. So this point is 1, 2, 3 units up and 1, 2. 2 units to the right. Okay. So इसको जब हम spin करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 3 units to the right and 2 units down. So that means ये यहाँ पे आ गया. अब ये जो हमने lines बनाई हैं इनको erase कर देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा tidy हो जाए. And if you guys want to be able to visualize transformation better, I have a video on it in which I've done like a whole demonstration कि किस तरह से 90 degree clockwise rotate होता है, किस तरह से 90 degree anti-clockwise and 180 degrees. So I'd strongly suggest that you guys watch that. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने पढ़ा था, somebody said that I hate transformation. Beta, yes, it's a bit annoying, agreed. But it's actually very easy to score in transformation. Okay, questions of transformation are always is one of those topics जिसके questions काफ़ी straightforward से होते हैं. You'll barely find a tricky question of transformation. ठीक है? So my suggestion would be that you work hard and you bring your concepts up to the mark. ठीक है? Okay. अच्छा, now let's do part B. Part B is अच्छा part B तो हमने कर लिया. Let's do part C. Okay. Part C says transformation P is represented by the matrix 0, -1, -1, 0. ठीक है. Yes, on you could have done that. I'm gonna have to see exactly. ठीक है. अभी don't take my word for it. I'm gonna have to see what the shape was. ठीक है. अभी मैं नहीं कह सकता. Extend to 3 and 4. What exactly is going on? What is a null matrix? Null matrix is वो matrix जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं. Achha, let me solve this question, then I'll see what queries you guys have posted. Okay. So the first thing we need to do is we need to understand what this matrix is representing. Okay. Now, like I said, please do not memorize these matrices. Okay. Not at all recommended. Okay. एक काम करते हैं. Let's figure out. Okay. Let's figure out what this matrix is representing. ठीक है. उसमें कोई doubt नहीं रहेगा. जैसे अभी we're having doubts already. Someone is saying y equals to -x reflection. Someone is saying rotation 180 degree clockwise. Okay, so let's settle that once and for all. So basically, ये हमारा एक point है a 1, 0, and here's another point 0, 1. ठीक है. अब something happened. Okay, what happened? We don't know. We're about to find out. Okay, that this point, which is basically a 1, 0, turned out over here. ठीक है. ये पॉइंट जो है हमारा 1, 0 जो है वो क्या हो गया, वो 0, -1 हो गया. ठीक है. एंड b which is 0, 1 came over here. ठीक है. अब ये क्या हो सकता है? ये रोटेशन तो हो नहीं सकता. ठीक है. enlargement तो ज़ाहिर नहीं हो सकता. ठीक है. It's not rotation, it's not enlargement. That means it could only be what? It could only be reflection. And we can see, actually, we can observe कि ये reflection है. Why? Because you have 1, 0, 0, 1, right? Now this matrix is transforming into 0, -1 and -1, 0. Okay, so you can see that the coordinates are not only being swapped but the sign is also changing. Okay, so what have we learned with this? We have learned that this is basically reflection. This is basically reflection along y equals to -x. Okay, you guys were right all along. Reflection y equals to -x is the answer. Okay. Yes, you got it. Whoever got it first, good job. ठीक है. अच्छा, अब next thing that we have to do is we have to take shape A, ठीक है, and see what's going on. ठीक है.
A को हमने y equals to minus x से reflect करें. Now you guys know the shortcut for reflecting a shape along the line y equals to minus x? No, it's not y equals to x. Had it been y equals to x, there would have been no minus sign, Aziz. Okay. How did we get the points? Abdullah, I have a separate video on matrix transformation. I'd suggest you watch that. उससे आपको matrix transformation याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You can just understand and then figure it out there and then. Okay. अच्छा, you guys don't know the shortcut for reflecting? I'm sure you do. थोड़ा ज़रा ज़हन पे जोर डालो. Swap places and change the signs. Yes, swap places and change the sign. Moving along the diagonals is also a legitimate method, but how about we swap places and change the signs? Okay, so let's start with this point. इसके coordinates है क्या? इसके coordinates है 1, 2. ठीक है, इसके coordinates है 1, 2. y equals to minus x से reflect करेंगे तो क्या हो जाएंगे? -2, -1. So let's mark that. -2, -1 यहाँ पे आ गया. ठीक है. अच्छा, फिर you have another point जिसके coordinates हैं 2, 2. 2, 2 को y equals to minus x से reflect करेंगे, so it's going to be -2 and -2. ठीक है, -2 and -2. There you go. Then let's go with this one. Okay, this one. This point has coordinates 3, 3. So if you reflect 3, 3 along the line y equals to minus x, it's going to be -3 and -3. Okay, -3 and -3. Now just one more to go, and that's this. This point has coordinates 3, 1. If you reflect it, it's going to be -1 and -3. So -1. No, wait a minute. 3, 1 is going to be -1 and -3. अच्छा, एक second. ओहो, 1, 3 है. भाई मैं कहूँ कुछ गड़बड़ है. It's there 1, 3. ठीक है, so that means -3, -1. ठीक है. Yes, Samna, I will explain. Hold on. ठीक है. Okay, that's it. ये हमारा shape बन गया. इसको join करें neatly with the help of straight lines. ठीक है. Please no free hand drawing. Do it with straight lines. And when you sort of step away from the question, make sure कि आपका shape जो है वही shape हो. ठीक है. I've seen students कि वो 90-degree triangle जो है कि वो non-90-degree triangle बन गया, reflect करने के बाद बड़ा हो गया. ठीक है. So make sure that doesn't happen to any one of you. ठीक है. Once before you step away, ठीक है, इसको हमने क्या बोलना था? इसको हमने D बोलना था. ठीक है. Make sure कि it's the same shape. अच्छा, can you explain the last part again, please? Last part. What was the last part? What was the last part? I don't. कौन सा last part? मैंने तो अभी यही solve किया. If you're talking about matrix transformation, then beta, I can't just explain matrix transformation to you like that. I'd suggest you watch the video that I have on matrix transformation. ठीक है. That will help you understand this concept better. And I can guarantee if you pay close attention to that video, you won't have to memorize the whole thing. You can just understand how the matrices are derived, and that's it. Okay. Sir, can you also multiply the vertices of the shape with the transformation matrix? Yes, of course you can do that. You can do that. Okay. Achha, describe fully the single transformation P. Well, we had already figured that out. Okay. Reflection. So stating the transformation gets you 1 mark. Okay. Along y equals to minus x. Okay, so writing reflection gets you 1 mark. Stating what line you're reflecting along gets you another mark. Okay. Amna beta, you need to stop spamming now. I'm gonna have to hide you. Okay. Sorry. Okay, now question number 4. Let's see what question number 4 says. The diagonal things work again. Work please. कौन सा diagonal? Yeah, is this what you're talking about? 5 years past paper are enough, given that you're doing well in them. Okay. Okay. Alright, question number 4. Now, by the looks of it, you might think, mensuration again, difficult question. But it's actually not. It's actually not difficult. It's actually very easy. Okay. Let's read the question. Let's see what it says. It says the diagram shows a gate post. Okay. It is made in the shape of a cylinder with a cone on top. Okay. The cylinder and cone each have diameter 8 centimeter. Okay.
Yes, P2 is exhausting. P2 is definitely exhausting. There's no denying that. The height of the cylinder is 95 centimeter and the height of the cone is 15 centimeter. ठीक है. So let me get done with this question. फिर मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. Okay. Calculate the volume of the gate post. So कोई भी composite solid है ना, उसकी volume निकालना is not that difficult. Okay. All you have to do is you just have to find the volume of the cylinder. Okay. I mean, find just whatever shapes you have, just find their volume and sum it up. Okay. So let's find out the volume of cylinder. Okay. So volume of cylinder निकालने के लिए देख लो, do we have all the ingredients? Almost. We don't have the radius, but we can very easily work it out. 8 divided by 2, 4. So pi into 4 squared times 95. Okay. Math makes me cry. Okay. Well, it makes a lot of people cry, बेटा. तो ये हो जाएगा आपका 1520 pi. ठीक है. अच्छा. Then let's find out the volume of the cone. Volume of cone. Okay, so volume of cone देखो formula given होगा. हाँ, formula given है. ठीक है. 1/3 pi 4 squared. Let's see height of the cone. अच्छा, अक्सर ना आपको height of the cone नहीं दी हुई होती, आपको slant length दी हुई होती है. So please make sure you read the question carefully and make sure that you're taking the right length. Okay. So 1 divided by 3 into 4 square, which is 16 into 15. So ये हो गया हमारा 80 pi. Notice that I've kept it in terms of pi so that I can sum it up in the towards the end. ठीक है. So 1520 pi plus 80 pi. Let's work this out. 1520 plus 80 is 1600. 1600 pi से multiply करो, so 1600 pi answer आ गया. ठीक है. Convert this into decimals, so you get 5026.5. तो इसको हम कर लेते हैं 50. पहले तो एक काम करते हैं. Let's write the answer that we're looking at. Okay. So 5026.54 and then correct to 3 significant figures हो जाएगा 5030 centimeter cube. ठीक है. So yeah, that's done. Isn't it 120 pi? No, it's not 120 pi. 16 into 5 हो जाएगा ना. 16 into 5 is 80. ठीक है, it's not 120. So yeah. Show that the total curved surface area. Now, if you didn't underline curved surface area over here and ended up finding the total surface area, you would be in deep trouble. ठीक है? So yeah. How much longer is the stream? बेटा पेपर ख़त्म होने तक है. ठीक है? अभी तो I think we're halfway through. I don't know if you're halfway through or not, but खैर anyway. So curved surface area. अब curved surface area में देखते हैं क्या क्या आता है. There's going to be this part, okay, which is the curved surface area of the cone. But before we can find out the curved surface area of the cone, we'll have to find out the slant height. Okay, so this is 15, this is 4, and this is L. Okay, L squared is equals to 15 squared plus 4 squared. So L is going to be equal to square root of 15 squared plus 4 squared, square root of 241. Okay, which is equal to what? Which is equal to 15.52. Okay. Sir, we have to give volume to only 3 significant figures. No, you have to give every non-exact answer correct to 3 significant figures. Guys, please make sure you read the instructions carefully. ये मैं नहीं बोल रहा, ये examiner बोल रहा है कि if the degree of accuracy is not specified in the question, if the answer is not exact, give the answer to 3 significant figures. Give answers in degrees, correct to 1 decimal place. Okay, and you will be penalized for this. Okay, how much I don't know, but you will be penalized. Examiner report का मैं कभी screenshot लेके मैं लगा दूँगा उस पे अपने Instagram पे. That will give you guys a better idea how it works. Okay. So curved surface area of the cone is pi r L, and then the curved surface area of the cylinder, which is 2 pi r h. Okay. So pi r L हमने कितना निकाला था? √241 ही कर लेते हैं ताकि राउंडिंग ऑफ के चक्करों से बच जाए. ठीक है. Plus 2 pi r h. So 4 into 95. ठीक है. So pi into 4 into √241. ठीक है. Plus 2 pi into 4 into 95. Okay. Okay, so we are looking at 2582.69. ठीक है, जिसको जब हम करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे तो क्या हो जाएगा 2580. ठीक है. What's O level? O level beta is punishment.
ठीक है, O level is a punishment. Sir, Zenomatic says to give the answer to the highest significant figure shown by the calculator. I'm not sure if that's true. Well, if he said that तो कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन बेटा मैंने तो इसके लिए कैम्ब्रिज वालों को ईमेल भी भेजी थी and they got back to me and they said कि yes, students are expected to give their answers correct to 3 significant figures. ठीक है, एक काम करते हैं, let me see if I still have that email. I'll open it up real quick and show it to you. Yeah, except for calculators जिसमें आप वो कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, वो अलाउड नहीं है. Where do I live? Why do you want to know where I live? Sir, simultaneous did not come in P1. Yes, if it did not come in P1, it's very likely to come in P2. No, beta, I don't teach accounts. अच्छा, I'm looking for that email. ठीक है, in the meantime हम एक काम करते हैं, हम कहाँ गए यार, एक सेकंड ठहरो. Okay, here it is. What is my qualification? क्यों भाई आपको इससे क्या, मेरी qualification क्या है? Sir, which I've made a video के कौन से topics important हैं, ठीक है? Okay, so moving on to the next question. अच्छा, part C तो हमारा skip हो गया, part C पहले करते हैं, ठीक है? फिर let's see, part C says a geometrically similar gate post has a total height of 150. ठीक है, calculate the total curved surface area. So again, ये वाले जो आपके questions होते हैं ना, they're usually squeezed in between mensuration, in between trigonometry, stuff like that. So A1 upon A2 is equals to L1 upon L2 the whole thing squared. ठीक है, A1 हम इसको ले लेते हैं जिसका curved surface area अभी हमने निकाला 2580. ठीक है, 2580, और A2 जो है वो हमें नहीं पता, वो अभी हम निकाल लेंगे. ठीक है, L1 जो है वो हम ले लेते हैं. अच्छा, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 95 + 15, दैट मीन्स इट्स 110. ठीक है, 110, और इसकी जो हाइट है वो 150 है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमने, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सिंपली इसको सॉल्व करना है. ठीक है, 110 डिवाइड बाई 150 को स्क्वायर करो. ठीक है, एंड 2580 से डिवाइड कर दो आंसर को, तो ये आ रहा है हमारा 4797.52. ठीक है, सो ये हो जाएगा 4800 हो जाएगा. 4790 तो हम नहीं कर सकते इसको, तो 4800 हो जाएगा ये. ठीक है, ओके, डम क्वेश्चन बट वाई स्क्वायर्ड. वेल, एरिया ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वॉल्यूम होती है तो हम क्यूब करते हैं. ठीक है, जी बेटा, आपका कैलकुलेटर अलाउड है. एक तो आई थिंक दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सवाल नहीं ख़त्म होगा कि मेरा कैलकुलेटर अलाउड है नहीं. आपका कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने कैलकुलेटर में ग्राफ नहीं बना सकते, एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने कैलकुलेटर में अलजेब्रा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आप अपने कैलकुलेटर में ये नहीं कर सकते कि आप उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वो डालें, अपना कर्व्ड सरफेस एरिया की आप इक्वेशन डालें और आप आर को सब्जेक्ट बना दें. ठीक है, as long as you can't do that, which I'm sure you can't, because the calculators that are not allowed वो इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है. ठीक है, they're not too mainstream. Okay, question number 5, completing square. Completing square is also kind of being tested lately. 2019 में भी आया था, मई जून अक्टूबर नवंबर में भी आ गया. So completing square का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो इसके लिए I'd suggest you watch the video. ठीक है, वैसे आई थिंक मिनी सीरीज़ में भी आया था. मिनी सीरीज़ में आई यूज़ एन iPad Pro बेटा, आई यूज़ एन iPad Pro. मिनी सीरीज़ में आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक आया था. ठीक है, खैर. सो बेसिकली व्हाट टर्म डू यू ऐड, द टर्म दैट यू ऐड ओवर हियर इज़ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. सो बेसिकली ये 3.5 कहाँ से आया, ये 3.5 आया ऐसे कि हमने 7/2 को होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया.
and the same term will also be subtracted. Because it's an expression, so you need to make sure that balance is maintained, and you will maintain balance how? That whatever you add, make sure that you subtract the same thing also. Okay? Then what happens is, this compresses into x plus 3.5. 3.5 is 7 over 2 in case you're wondering. The whole thing squared minus 13 minus 49 over 4. ठीक है, सिर्फ मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इज़ दैट ट्रू? आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? माइनस 13 माइनस 49 अपॉन 4. ठीक है, so what do we have? We have x plus 3.5 the whole thing square minus 101 upon 4. ठीक है, अब देखो सवाल इसको यहाँ पे ना छोड़ देना. Make sure, yeah, you can compare both the equations also, you can do that also. ठीक है, make sure कि आप इसको इससे कंपेयर करो ताकि आप a और b का आंसर दे सको. ठीक है, so a is 3.5 or 7 over 2, whatever way you wish to write it as. ठीक है, and as far as b goes, b is minus 101 upon 4. ठीक है, so watch out for that. Minus 13 minus 49 upon 4. Let me just double check. Yep, 101 upon 4. ठीक है, hopefully that's clear now. अच्छा, part 2 says hence solve the equation. Okay, hence solve का मतलब कि you have to use whatever you did in part 1. ठीक है, you can't do it independently, you have to use whatever you did in part 1. ठीक है, so x plus 3.5 the whole thing square minus 101 upon 4 is equals to 0. So since it's the same equation, ठीक है, आपने क्या करना है? आपने उसी equation को equals to 0 करना है. So that means x plus 3.5 the whole thing square is equals to 101 upon 4. ठीक है, you take the square root on both sides. So that means x plus 3.5 is equals to plus minus. Permutation combination की पूरी वीडियो अपलोड नहीं हुई, is that correct? No, you can't use the quadratic formula because the question has said hence solve. Okay, if you use the quadratic formula over here, you're not going to get any marks. ठीक है, hence अगर आ गया, so that means now you're restricted. Okay, so plus minus 5.0249. Since it's not the final answer, that means मैं इसको correct do. I'm just going to take more decimal places. So x is equals to plus minus 5.0249 minus 3.5. तो एक वैल्यू हम प्लस के साथ निकाल लेते हैं. ठीक है, minus 3.5. So एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.52, correct to 3 significant figures. ठीक है, and the other value is going to be minus 5.0249 minus 3.5. Okay, so that's going to be minus 8. एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, वो पता है क्या? वो ये कि आप अपने कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को सॉल्व करें and check your answer. That is something I will definitely encourage. 1, 7 and minus 13. 1.52 and minus 8.52. Yes, that's correct. Okay. Repeat. What do you want me to repeat? So पहले तो सब ये समझ लें कि whenever the question uses the word hence, that means now you're restricted. Restricted how? You have to use whatever you did in part 1 or in the previous part, wherever. ठीक है? If you were to use the quadratic formula over here and then give your answer, you would get no marks. ठीक है? No marks at all. Okay? So use the completed square form, set it equal to 0, take the minus 101 upon 4 over to the other side, take the square root on both sides. ठीक है? And just solve it. So can you please solve x cube plus y cube equals to z cube? But that's not even part of your syllabus. I mean, this is completely irrelevant जो आप सवाल पूछ रहे हो. ठीक है? Okay, simplify. Again, very easy. 4x square minus 9. These are two perfect squares. 4x square minus 9 can be written as 2x whole squared minus 3 squared. Okay, denominator को भी ज़रा factorize करते हैं. 2 into 12 is 24. Factors of 24 that give you minus 11 are going to be 8 and 3. 2x square minus 8x minus 3x plus 12x. So numerator हमारा बन गया क्या? 2x plus 3, 2x minus 3, a square minus b square, which is equal to a plus b, a minus b. ठीक है. Now as far as the denominator goes, denominator को हम ज़रा step by step factorize करेंगे. 2x common निकाला, x minus 4, minus 3 common निकाला, x minus 4. So what are we looking at? We're looking at 2x minus 3 into x minus 4. So our factorized denominator looks like this. 2x minus 3
into x minus 4. Now simplify, 2x minus 3 and 2x minus 3 can be crossed out, and you're finally left with 2x plus 3 over x minus 4. Factorization से ही क्या है बेटा? Factorization से ही क्या है? ठीक है? So these are free marks, okay? These 3 marks were absolutely free marks. बस आपका थोड़ी सी algebra strong होनी चाहिए, and that's it. That's pretty much all you need. ठीक है? अच्छा, अभी भी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसका पार्ट सी रहता है. ठीक है? So ये भी देखा जाए तो free के marks हैं. So 4 plus 3 7 free marks in this question alone. Okay. So what is the LCM going to be? The LCM is going to be x plus 4 times x minus 1. ठीक है? 2x को multiply करो x minus 1 से, तो ये हो जाएगा 2x square minus 2x. 6 is going to be multiplied by x plus 4. So that means plus 6x plus 24 is equals to 2. So 2x square plus 4x plus 24 upon x square minus x plus 4x minus 4, ठीक है, is equals to 2. इस तरह के questions are very common. Hussein, you'll find questions like these in paper 1 and paper 2, okay? And if you're not getting these questions right, it's a shame, because these are basically questions even if you just get these questions right, you can easily pass in the exam, okay, given how low the threshold usually is. So cross multiply किया, cross multiply करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x square plus 6x minus 8. ठीक है, अब तो quadratic equation भी नहीं रही. 2x square and 2x square just sort of cancel out, okay? So 4x minus 6x is equals to minus 8 minus 24. Minus 2x is equals to minus 32, minus gets cancelled out, x is equals to 32 upon 2, which means x is equals to 16. So 4, yes, you had to earn these marks, but conceptually they're pretty simple. May June करवा दिए हैं. If you're talking about yearly past paper, then May June नहीं कराया. Basically we're just solving difficult past papers, okay? Okay, so moving on, number sequences. Now I hear number sequence का question जो है वो paper 1 में आया था, but please don't end up neglecting it completely, ठीक है? Do still do pay attention to it, okay? It might come again in paper 2, ठीक है? So question number 6 part A. So you have 3 in the first counter, ठीक है? Then 8, then 15. So I think we can see what the pattern here is. Plus 5 plus 7. अब क्या करेंगे ज़रा बताएं मुझे. Okay, when does the compressed form have a negative sign? If the coefficient of x is negative, then the compressed form has a negative sign. If the coefficient of x is positive, that means you'll have a positive sign in between. ठीक है? अच्छा, those of you who are saying the permutation combination पूरी upload नहीं है, please check the playlist where it says live stream add maths. You'll find it over there. Plus 9 plus 11, yes, plus 9. So 15 plus 9 is what? 24. Plus 11, that is what? That's 35. 15 plus 9, yep, 24 plus 11, 35. ठीक है? अच्छा. Okay, so far so good. Find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं आप लोग कि what kind of a sequence are we dealing with? What kind of a sequence are we dealing with? देखो, नंबर सीक्वेंसेस दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकता, मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि डोंट स्किप इट कम्प्लीटली. या वी डीलिंग विद अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ठीक है? अच्छा, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज़, आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. इट्स वेरी ईजी, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला. Okay, now, so basically 3 is the first term. The first difference, that means difference between the first two terms, is 5, and difference of the difference जो कि consistently common है वो है 2, ठीक है? So 2 upon 2, n square minus 3n plus 2. So this cancelled out, and now you have 3 plus 5n minus 5 plus n square minus 3n
plus 2. Okay, so 3 minus 5 is minus 2, minus 2 plus 2 is 2, so you're just left with n square plus 2n. Okay, so yeah, that's it. N square, wait a minute, n square, ठहरो उसको ज़रा डबल चेक करो, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है. 16 plus 4 into 2 is 8, 25, नहीं सही है, सही है. 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 4 is 8. Whenever you get the sequence, make sure कि आप ना उसको आप ज़रा क्रॉस चेक कर लें. कैसे क्रॉस चेक? के वैल्यूज़ प्लग इन करके, कि अगर मैं इसमें 2 प्लग इन करता हूँ तो क्या 8 आ रहा है, 3 प्लग इन करता हूँ तो क्या 15 आ रहा है, 3 स्क्वायर इज़ 9, या सही है. Okay, part C. Part C says Ken has a bag containing 1358 counters. ठीक है. Sir, do you take international online class or have any online course for A-level? I want to learn from you. You can reach out to me on Instagram. I'll tell you the details, whatever. Okay, but I haven't started registrations for the next year. Okay, just keep that in mind. Okay, so n square plus 2n is equals to 1358. Okay, he makes the largest possible pattern in the sequence pattern P using these counters. Okay. So is the answer 5n minus 2? No, it's not 5n minus 2, beta. Okay. So n square plus 2n minus 1358. Up just to save some time, I'm using the calculator to find out the value. Okay. And I will encourage you guys also to use your calculator to check your answer. ठीक है. वैसे तो हम इसको quadratic formula लगा के solve करेंगे. ठीक है. So हमारे पास n का 2 answers आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये n नहीं रहा, ये basically p हो गया. ठीक है. This is now p. p square plus 2p. So p square plus 2p minus 1358 equals to 0. ठीक है. So now we're getting two values of p. p is equals to 35.86 or p is equals to minus 37.86. अच्छा. So question for you guys is कि मुझे बताओ, what value of p are we going to consider? Yes, it's kind of understood that we're going to consider the positive value, negative तो हम consider नहीं करेंगे, ये तो मैं आप लोगों से पूछ भी नहीं रहा. लेकिन मुझे बताओ 35.86 तो है, लेकिन what value of p are we going to consider? No, not 36. Okay, that's exactly why I asked you guys this question. It is not 36. We're not going to consider 36. क्यों नहीं कंसिडर करेंगे 36? अब मैं आपको ना इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. सो बेसिकली लेट्स से कि आपको एक सूट सिलवाने के लिए, ठीक है, यहाँ बल्कि एक काम करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल. Let's say कि in a classroom you can fit a total of या maximum of let's say 27.8 students. ठीक है, let's say in a classroom. ठीक है, after doing some math, ठीक है, आपने conclusion draw किया that you can fit 27.8 students. ठीक है, maximum. सही है. So अब मुझे बताओ, since 27.8 पे हमारी capacity exhaust हो गई. So what are we going to go with? Are we going to go with 28 students or are we going to go with 27 students? Considering that maximum जो है वो 27.8 है. 27.8 बिल्कुल classroom की capacity के बराबर है. What are you going to go with? Yeah, we're going to go with 27. Okay, so it's not just blindly rounding off. ठीक है, इस चीज़ का please ख्याल रखें. It's not like we just look at the number and we round it off. Yes, it's round down exactly. ठीक है. Van drivers go with 28. ये तो सही बात है. 28 भी नहीं बेटा, वो इसमें भी जो है वो 30-35 कर लेंगे, कहीं ना कहीं गुंजाइश निकाल लेंगे. ठीक है. खैर, anyway, so yeah, so basically we'll have to go with 35. ठीक है. Okay, so that means कि p की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 35 होगी. ठीक है. Sir, I'm doing my advanced tuition right now. Beta, you should be paying attention to what your teacher is saying. I don't think you should be watching this stream. Khair, he uses all of the remaining counters to make another pattern in the sequence pattern Q. अच्छा, अब remaining counters कैसे निकालेंगे ज़रा ये देखो. So basically n square plus 2n था ना. n square plus 2n में हम एक काम करते हैं, हम n की जगह 35 रखते हैं. Let's see what happens. 35 squared plus 2n
Let's see what this is equal to. Sorry, 2 times 35. ठीक है, 2 times 35. Okay, so 35 squared plus 2 times 35, this is equal to 1295. ठीक है, now remember total counters कितने थे? total counters थे 1358. so 1358 में से 1295 माइनस करो, 1358 माइनस आंसर, so 63 बचता है. ठीक है, so that means 63 counters are still left. ओके, अब 63 काउंटर्स की वो एक और सीक्वेंस बना रहे हैं, एक और पैटर्न बना रहे हैं, दैट्स पैटर्न क्यू. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम वापस से वही करेंगे कि n स्क्वायर प्लस 2n है ना, उसको हम कर देंगे q स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल्स टू 63. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. q स्क्वायर प्लस 2n माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0. लेट्स सॉल्व दिस. इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस डिड कम इन द पेपर, यूर राइट. ओके, सो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 1, 2 and minus 63. ठीक है, so q is equals to 7 or q is equals to minus 9. So obviously we're going to go with 7 and 7 is the correct answer. ठीक है, yeah, you're right, a question similar to this I'm sure did come in paper 1. ठीक है, but yeah, it's still important. Okay, question number 7. Question number 7, अब देखो again ये इस तरह के questions हैं जो कि आपके बेसिकली पेपर के साथ आ सकते हैं. एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आपका नॉर्मली जो बड़े मेन टॉपिक्स होते हैं ना उसके साथ स्क्वीज्ड होता है. ठीक है, यस सर, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन. एक्सप्लेन व्हाट बेटा? चलो मैं ये दोबारा से बता ही देता हूँ, जस्ट गिव यू गाइस रिकैप. टोटल 1358 थे, 1358 में से 1295 यूज़ हो गए. कैसे? जब हमने n की जगह 35 प्लग इन किया. ठीक है, सो 1395 यूज़ हो गए. सही है, 1295 सॉरी यूज़ हो गए. ओके, सो माइनस किया, दैट मीन 63 बचे. अब 63 काउंटर्स का वो कौन सा पैटर्न बना सकता है? उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो भी हमारे पास nth टर्म थी, वी सेड दैट इक्वल टू 63, सो दैट गेव अस द वैल्यू ऑफ q. अच्छा, मैंने यहाँ पे कहीं q लिखा है, कहीं n लिखा है, फिक्स्ड इट नाउ. ओके, सो दैट मीन्स q जो है ही कैन मेक अनदर पैटर्न जिसमें 63 काउंटर्स होंगे, और वो कौन सा पैटर्न नंबर होगा? वो पैटर्न नंबर 7 होगा. ठीक है, वैसे बाय द वे अगर आप इसी को, या बल्कि नहीं, इसी को नहीं कंटिन्यू करते, इसी तरह से कर लो. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7. शो दैट पी क्यू एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस आर एक्स. अच्छा, अब देखो यहाँ पे कोई भी लेंथ नहीं है. ओके, हैव अ गुड लुक एट दिस ट्राइंगल, आई मीन एट दिस ट्राइंगल्स, एंड सी दैट देयर आर एब्सोल्युटली नो लेंथ्स इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो मुझे बताओ, हाउ डू यू प्लान ऑन proving that these two triangles are similar? Question for you guys. How do we prove that these two triangles are similar? So basically we'll do it with the help of angles. Okay, so what I was looking for was basically a to the point answer, and that is with the help of angles. Okay, so yeah, of course we can use circle properties. So कौन से दो triangles के बारे में बात करें? PQX and SRX. So PQX is the one that I'm highlighting in red, okay, and SRX is the one that I'm highlighting in green. Okay, so basically these two angles are going to be equal. Angle PQX is equals to angle XRS. Okay, और reason हम क्या देंगे? reason हम देंगे same segment, and just like that these two angles are also going to be equal. Angle XSR is equals to angle XPQ, same segment, and these two angles are going to be equal. Vaja, vertically opposite. Angle PXQ is equals to angle SXR, vertically opposite. 3 marks, so that means आपने 3 logical statements देने. ये नहीं कि आप पूरे कहानी लिखना शुरू कर दिया आपने कि भाई ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये दिखने में सिमिलर लग रहे हैं, ये सब नहीं लिखना आपने. ठीक है, जस्ट नीड टू राइट 3 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो कि प्रूव करते हैं दैट दे आर सिमिलर. ठीक है, ओके, नाउ ASA means a triangle with 2 angles lying on the line. Yes, that's what ASA means. बिकॉज मैंने बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं यहाँ पे. ठीक है, आई चेक्ड अ लॉट ऑफ पेपर्स जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरीज लिखी होती है, उसमें काम की बात एक नहीं होती. ठीक है, अपना ओपिनियन लिखा होता है. अब आपका ओपिनियन जो है ना मैथ में नहीं मैटर करता. ठीक है, मैथ अपने ओपिनियंस आप दे सकते हैं लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में,
और किस में दे सकते हैं, और जिस बहरहाल मैथ में आपका ओपिनियन डजेंट मैटर, ठीक है, मैथ इज़ मैथ, ओके, वो मेरे लिए भी वही मैथ है जो आप सबके लिए है, ठीक है। सर हम ऑल्टरनेट एंगल से नहीं कर सकते बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे उसने कहीं लिखा थोड़ी है कि ये पैरेलल हैं, ठीक है। ये भी होता है कि स्टूडेंट्स बिजनेस में, हाँ बिजनेस भी इकोनॉमिक्स भी, अभी मुझे याद है इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आपका ओपिनियन, उसमें आप बेशक आपका जितना दिल चाहे आप अपना ओपिनियन दें, ठीक है। यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दीजिएगा प्लीज़, ना ही अपनी assumptions दीजिएगा, ठीक है। पारस डिटेक्टेड ओपिनियन डिटेक्टेड, खैर एनीवे, सो या ओके। पार्ट बी सेस यस बेटा, जब तक वो कहे हम उसे पैरेलल नहीं कह सकते, ठीक है। अब आई नो अक्सर स्टूडेंट ही कहते हैं सर लेकिन दिख तो रही है कि पैरेलल हैं, तो बेटा दिखने पे नहीं जाते, ठीक है। लुक्स आर डिसीविंग, सो ये रिमेंबर दैट। सर कैन वी राइट it in continuous form? What do you mean continuous form? Oh, you mean like one after the other? Yeah, you can do that. लेकिन भाई मतलब आपने लाइनें बचा के क्या करना है, आपने मतलब इस्तेमाल करनी है इनको, नहीं ना, तो जब हैं इतनी सारी लाइनें तो उसको इस्तेमाल करो। सर पेपर ख़त्म होगा, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। अच्छा है ना, आपका एग्ज़ाम डे की तैयारी हो रही है। सर वेयर इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रीम? भाई गो टू द प्ले लिस्ट, एड मैथ लाइव स्ट्रीम्स, उधर आपको मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, माई लाइफ माई रूल्स, बेटा फिर एग्जामिनर भी यही बोलेगा कि माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। Okay, part B. Let's get to work, guys. Let's get to work. Px is equals to 8.1 centimeter, Qx is equals to 6.3 centimeter, and Sx is equals to 4.5 centimeters. Calculate Rx. अच्छा देखो, जहाँ similar triangles पढ़ो, ठीक है, जहाँ similar triangles पढ़ो उधर पता है क्या करो, उधर रेशो बना लो फौरन से, ठीक है। Basically take the first two letters of this triangle PQ and divide by the first two letters of this triangle SR is equals to qx over rx, which is equal to px over sx, ठीक है। अच्छा, सो pq, हाउ मच इज pq? अच्छा अब देखो आपको px दिया हुआ है, ठीक है, एक काम करते हैं इसको ज़रा हाथ के हाथ यहाँ पे लिख भी देते हैं। px आपको दिया हुआ है 8.1, ठीक है, qx आपको दी हुई है 6.3 एंड sx इज़ गिवन टू यू एज 4.5, ठीक है। ओके, सो पी क्यू एस आर को कोई लेना देना नहीं है, क्यू एक्स इज 6.3, आर एक्स तो हमें चाहिए, ठीक है, पी एक्स इज़ 8.1, एस एक्स इज़ 4.5। इतना मासूम सा सवाल है, सारी वैल्यूज़ आपने प्लग इन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सर वाई डिड यू डिलीट तलहा वाई? ओके, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट, प्रॉब्ली मिस्ड द मैसेज। 6.3 इंटू 4.5, ओके, सो आर एक्स इज इक्वल्स टू 6.3 इंटू 4.5, ठीक है, डिवाइड कर दो 8.1 से तो 3.5, देयर यू गो, दैट्स इट। सर इसका रेशियो वाला पार्ट समझा दें बेटा, इसमें रेशियो कहाँ आया है मुझे बताओ, रेशियो मैंने कहाँ यूज़ किया है यहाँ पे? आई मीन अनलेस यू टॉकिंग अबाउट बी पार्ट 1, तो बी पार्ट 1 तो मैंने अभी सॉल्व किया, ठीक है। सो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, उनकी सारी लेंथ्स जो होती हैं वो एक सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है। आई मीन अनलेस यू आर सेइंग ओ अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट पार्ट 2, तो पार्ट 2 पे तो मैं आऊँगा तो बेटा समझा भी दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 says find the area of triangle PQX is to area of triangle PSX। अच्छा देखो, इस एरियाज का रेशियो निकालने के लिए what you want is basically one set of lengths, ठीक है। Now it's always a good idea to go with what? To go with the lengths that are given to you in the question, ठीक है। So A1 upon A2 is equals to L1 upon L2, the whole thing squared, okay। So 8.1 over 4.5 लो, उसको whole squared कर लो, so A1 upon A2, let's work this out, 8.1 divided by 4.5, the whole thing square, so we have 81 is to 25, and that's it, that's our answer. How much longer? Well, as long as it takes. अभी से क्यों थके हैं आप लोग, मुझे बताएं, एग्जाम में क्या करेंगे? लेट मी टेल यू गाइस, ओके, लेट मी बी वेरी रियल ओवर हियर, पेपर 2 इज एग्जॉस्टिंग, ओके, पेपर 2 is exhausting, so I hope you guys are practicing, you guys are doing full length papers at home also, ठीक है।
so that at least you get used to sitting down for 2.5 hours in the same room, same chair, whatever. So you need to be doing that. वरना फिर एग्ज़ाम डे पे आपको बहुत ही आपके लिए जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन होगी, बिकॉज आप यूज टू ही नहीं होंगे इस इन्वायरमेंट के. So please, guys, make sure that you are solving full-length past papers at home. So how hard is it? Well, of course it's hard, it's difficult, it's challenging. ठीक है. Okay. Now, अच्छा अब ये आ गया word problems leading to quadratic equations. ठीक है. Not necessarily quadratic equation, but yeah, leading to some algebraic equation. ठीक है. Question 8 जैसा paper 1 में आया था. Okay. Alright, let's do this question. Let's see what it says. So it says triangle ABCD has area 80 centimeters square. ठीक है. Triangle PCQ is removed from one corner of the rectangle. BQ is equals to DP, which is equal to 4. ठीक है. ये 4 है, ये 4 है. और AB पूरी कितनी है? AB पूरी आपकी x है. Not according to me, according to the question. ठीक है. Write down an expression in terms of x for CP. Okay. So ये तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है. रेक्टेंगल है तो सामने वाली भी जाहिर सी बात है, it's going to be x. Okay. So CP is going to be x minus 4. Okay. X minus 4. Okay. Explain why CQ is equals to 80 upon x minus 4. Okay. अब explain भी आपने अपने words में नहीं करनी है, आपने mathematically explain करनी है. ठीक है. So basically, सबसे पहले we'll have to work out CB. How exactly? CB into x is equals to 80. Why? Because it's given in the question that the area is equals to 80. So CB is equals to 80 upon x. Okay. And then if you want to find out CQ is going to be CB minus BQ. So CQ is equals to 80 upon x minus 4. Okay. There you go. That's it. That's your answer. Okay. So again, explain. You don't have to explain it in words. Just some straightforward statements, mathematical statements, and that's it. Show that the area y centimeter square is given by 32 plus 2x plus 160 upon x. These are 3 marks. Acha, in case let's say you were unable to prove what you had to in the previous parts, then you can still scrape off marks over here by using the answers that are given to you. Okay, 80 upon x minus 4. अब मुझे बताओ theoretically how will I find out the equation of the shaded region? How will I find out? Didn't get the B part. So B part में देखो basically area इसका 80 है. That means this length into this length is 80. So you can work out this length by dividing 80 by x. ठीक है. 80 को मैंने x से divide किया. देखो length into width क्या होती है? Length into width area होता है. सवाल length जो आपको दी हुई है वो x दी हुई है. ठीक है. You can work out the width by simply taking x over to the other side. So 80 upon x is basically this entire length. As you can see, 80 upon x. And then this part is 4, not according to me, according to the question. I hope you read the question carefully. So if this is 80 upon x and this part is 4, how much is CQ going to be? 80 upon x minus 4. Okay, yeah, 80 minus area of triangle is basically going to give us the area of the shaded region. Okay, and area of the shaded region is basically equal to y. ठीक है. So theoretically, अब देखो इसमें भी ना बहुत ज़्यादा working required है. Rectangle minus triangle is what we're looking for. Rectangle का area is 80. Area of triangle is going to be half times base times height. ठीक है. तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ बल्कि ज़रूरी नहीं है, इसको बेस ले लेते हैं x minus 4. ठीक है. half into x minus 4. And then let's take this as our height, which is 80 upon x minus 4. Okay, a lot of algebra is about to come your way. Okay, into 80 upon x minus 4. Okay, and this will give you what? This will give you y. So y is equals to 80 minus, abhi is 80 minus ko minus hi rehne do. Okay, don't do anything about that. First let's fix what do we have inside the bracket. Okay, so basically ये हो जाएगा x into 80 upon x is just going to be 80. ठीक है. x into minus 4 is going to be minus 4x. ठीक है. This is going to be minus 320 upon x. सही है. And इसको ज़रा इधर लेकर आते हैं. Minus 4 into minus 4 is going to be plus 16. ठीक है. And do not forget कि आपका एक half जो है वो बाहर बैठा हुआ है. ठीक है. You have a half outside. सही है.
अच्छा भाई, सो y इज इक्वल्स टू 80 माइनस, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू 80 प्लस 6, दैट्स 96, सो हाफ इंटू 96 माइनस 4x माइनस 320 अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 96 अपॉन 2 इज़ 48 माइनस 2x माइनस 640, सॉरी नॉट 640, बेसिकली 320 अपॉन 2x। ठीक है, 80x क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 80x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, 80x होगा थोड़ी देर के लिए, 80x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, व्हाट वी हैव 80 माइनस 48 प्लस 2x minus, अब 320 upon 2 is basically going to be 160, so minus 160 upon x, and 80 minus 48 is 32, so 32 plus 2x minus 160 upon x. ठीक है, so yeah, quite a lot of work, huh? Prove हो गया, that's it, you can move on. Where did 48 come from? 48 ऐसे आया कि हमने हाफ को 96 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये पूरा हाफ इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ओके। पार्ट डी, चलो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस भी इसी के अंदर आ गया, ग्रेट। अच्छा जी, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। सो सबसे पहले तो एक प्री कमांड है इसमें, वैल्यू प्लग इन करके निकालने का। ठीक है, सो 32 प्लस 2x, 32 प्लस 2 इंटू 16 ब्रैकेट 1 प्लस 160 अपॉन x। ठीक है, दैट मीन्स 160 अपॉन 16, सो दिस इज 74। सही है, अब आपने क्या करना है, प्लस 160 अपॉन x नहीं हुआ, प्लस 160 अपॉन x ही तो हुआ है बेटा। अच्छा हाँ, प्लस होना था, सॉरी माय बैड, ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, प्लस होना था। ठीक है, ओके, सो 4 पे 80, 4 पे 80 is right over here, 6 पे 70.7, so get familiar with your scale first. So basically you have 2 units divided into 5 small boxes, that means 0.4. ठीक है, and over here you have basically 1 unit split into 5 boxes, that means 0.2. ठीक है, अच्छा जी, सो 4 पे 80, 6 पे 70.7, सो 6 पे 70.4, 70.8, सो 70.7 इधर ही कहीं होगा। ठीक है, 8 पे 68, सो 8 पे 68, 10 पे भी 68। ठीक है, 12 पे 69.3, so 69.3 is going to be, so basically 68.4, 68.8, 69.2 इधर कहीं कर लेते हैं। अच्छा, देन यू हैव 14 पे 71.4, 14 पे 71.4, सो हियर 70, 70.4, 70.8, 71.2, 71.6, तो 4 बीच में होगा। 16 पे 74, चलो ये एक तमीज़ की वैल्यू आ गई। 18 पे 76.9, not too bad, and then finally 20 पे 80. Okay, great. अच्छा, now I'm just going to join all the points. ठीक है, using a smooth curve. Okay, so far so good. Is it okay to make an x? Yeah, actually, you know what, x ही बनाओ तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ डॉट बना के सर्कल कर लो। ठीक है, पेपर में प्लीज़ आप लोग x बनाओ या डॉट बना के उसको सर्कल कर दो। Okay, this requires a lot of concentration by the way. अगर डॉट बना रहे हो तो डॉट को सर्कल करो। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई वैल्यू आगे पीछे हो गई। 18 पे इट वाज 76.9, एंड देन 20 पे 80, 16 पे 74, नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो फार सो गुड, डॉट्स बनाई अक्रॉस, आई थिंक मैंने इसका जवाब दे दिया। ठीक है, इट्स बेस्ट अगर आप जो है वो 76.9, ठहरो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई वैल्यू आगे पीछे हुई है। 18 पे 76.9, ओ या ऑफ कोर्स आगे पीछे हुई है। 76.9 को मैंने सही नहीं मार्क किया। 76.9 हैज़ टू बी
So basically 76 over here. Okay, there you go. Okay, सर परफेक्ट कर्व कैसे बनाते हैं? प्रैक्टिस करो ना बेटा, प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस करो, you'll get it wrong. Once, twice, third time probably सही होगा, better than the first, and that's it. No, keep on getting better. Use your graph to find the minimum possible shaded area. अच्छा अब देखो y basically क्या represent कर रहा है? Y basically represent कर रहा है area, ठीक है? So y is representing the area, that means के जो minimum possible area आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है? So minimum possible area हमारा क्या बनेगा? Let's see. So you have 68, ठीक है? This is going to be 66.4, 66.8, 68.2, 67.2, 67.6. So in between 67.6 and 68 तो ये बनेगा हमारा 67.8, ठीक है? So there you go, 67.8, ठीक है? Does examiner accept empty paper? Yeah, why not? I mean, one less paper for the examiner to check. How to make a correct tangent? My gradient is never correct. अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ. चलो इस सवाल में tangent नहीं है, but let's say इस सवाल में tangent बनाना होता है ना, let's say इस point पे tangent बनाना होता, ठीक है? So tangent बनाते हुए एक simple सी tip याद रखो, वो ये कि आपका tangent जो है उसका बेसिकली जो डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व है ना वो सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल होना चाहिए. सिमेट्रिकल से मतलब जितना यहाँ पे दूर है कोशिश करो उतना ही यहाँ पे दूर है, ठीक है? सो दिस इज़ जस्ट वन वे. एंड टेंजेंट को ना एकदम से स्केल रख के लाइन नहीं खींचा करो, ठीक है? जस्ट प्लेस योर स्केल इन सच अ वे दैट once you're completely satisfied with your tangent, once you're satisfied that yes the distance is going to be the same above the curve and below the curve, I mean above the point and below the point, then you make a straight line, ठीक है? And do keep on practicing, okay? Keep on practicing. ये चीज़ें practice से ही बेहतर होंगी. There's no other way to it. Everyone leave your paper blank so I can get a distinction. Wow. You can take a power nap for 2 or 30 minutes. What we consider as power. Okay, the ideas की कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास. Anyway, question number 9. Let's do question number 9, and I believe this is the last question. Okay, no. Question number 9 के बाद हमारे पास ये भी है. Okay. ठीक है, we're almost there. Okay, चलें, you guys help me out over here. It says show that BAC is equals to 44.0. How will you calculate this angle? जल्दी बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसमें ज़रा हम थोड़े शॉर्टकट्स लेंगे टाइम बचाने के लिए, ठीक है? ये मज़े का सवाल है. ओके, कोसाइन रूल, या कोसाइन रूल साउंड्स गुड, ठीक है? कोसाइन रूल हम कैसे लगाएंगे? कोसाइन रूल हम ऐसे लगाएंगे कि कॉस ऑफ BAC, ठीक है? बस याद रखो कि ऑपोजिट वाली लेंथ जो है वो माइनस होती है, बाकी दोनों लेंथ्स जो है वो क्या होंगी? वो प्लस होंगी, ठीक है? सो 520 स्क्वायर्ड प्लस 950 स्क्वायर्ड माइनस 680 स्क्वायर्ड ओवर 2 इंटू 520 इंटू 950, ठीक है? अच्छा, अब मैं पूरी वर्किंग नहीं कर रहा, आंसर दिया हुआ है तो इसी आंसर को इस्तेमाल कर लेते हैं, 44.0 कर लेते हैं, ठीक है? सो शॉर्टकट हो गया. येस आई नो, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, इसलिए ज़रा इसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं. कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C. A फ्रॉम C इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है? ये अगर आप तुक्का लगा के भी लिख देंगे और आपका आंसर सही हो जाता है, सो यू विल गेट मार्क्स. ओके, नाउ डोंट गेट एनी आइडियाज़, आई एम जस्ट trying to tell you कि 1 मार्क्स के लिए कोई भी 1 मार्क के लिए कोई भी वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती. So it's just going to be 125 plus 44. So that's equal to what? 125 plus 44. That's 169 degrees. ठीक है, that's that. अच्छा ज़रा देख लेते हैं. A from C चाहिए था ना? A from, अच्छा wait a minute, मैंने C from A निकाल दिया. अच्छा, C from A. If you have C from A, how will you calculate A from C? दिस इज़ बेसिकली C फ्रॉम A. तो अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स बेयरिंग का मैंने एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है, ठीक है?
लुक अप बेयरिंग, यू विल फाइंड इट, ठीक है. उसमें मैंने ना एंड में एक शॉर्टकट दिया हुआ है बेयरिंग का, ठीक है. So basically, if the bearing of C from A is more than 180, we subtract 180. If it's less than 180, we add 180. ठीक है. So इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि we will take 125 plus 44, तो 169 आ गया. इसमें हम 180 ऐड करेंगे. तो इसमें जब हम 180 ऐड करेंगे, 169 plus 180, so that's equal to 349 degrees. There you go. 349 degrees is our answer. Okay. Part C. Part C says farm A and farm B are joined by a straight track AB. Okay, we can see that. Amira walks along the track from A at a constant speed of 4.6 kilometers per hour. Okay. Calculate the time it takes for Amira to walk from A to the point that is closest to farm C. Give your answer in minutes and seconds. Okay, so point that is closest to point C, how is that going to look like? What is the point that is closest to point C going to look like? Anyone? Sir, my trace center was at Ramada and they allowed me tracing paper, but my P2 is an alpha. Please बेटा ट्रेसिंग पेपर के लिए मैंने आपको बताया ना कि आपके पास एक सिंपल सी आर्गुमेंट है. आर्गुमेंट भी नहीं है, एक सिंपल सा आपके पास एक पॉइंट है. जो भी आपका इन्विजिलेटर हो उसको पोलाइटली बोलो कि भाई पेपर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ट्रेसिंग पेपर इज़ अलाउड, सो फिर वो क्यों रोकेगा आपको, ठीक है. इन क्वेश्चन 6 फॉर फाइंडिंग सीक्वेंस वी कुड 3 5 4 6 3 5 15. Yeah, you could do that. Okay, so basically straight line from point C. Yes, ये तो आप मुझे सही कह रहे हो, लेकिन remember the shortest distance is always the perpendicular distance. Okay, so वो distance जो कि C के सबसे करीब होगा, सबसे कम होगा C से, वो perpendicular होगा. Yes, so basically the word that I was looking for is perpendicular. ठीक है. अच्छा, now what is Amira doing? Amira is walking from point A to point C, so that means Amira is going to stop over here. ठीक है. And what do we need to do? We need to find out the time she takes correct to the nearest second. Okay, so सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो मैंने blue से highlight किया इसका distance निकाल लेते हैं. अब good thing that the question made us work out this angle 44.0. double check कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो गलत हो जाए. Yeah, 44.0 it is. So basically this is, हमें क्या चाहिए, हमें adjacent चाहिए just by the way, ठीक है, opposite नहीं चाहिए, हाँ हमें adjacent चाहिए. So adjacent and we have hypotenuse, so that means we're going to use cos, ठीक है. So cos of 44 is equals to adjacent upon hypotenuse, so that's 520. Let's work this out. Make sure that your calculator is in degree mode. I mean reset कर लेना बस calculator को, ठीक है. Cos 44 into 520, so that is 374.0596. Okay, अब ये मीटर्स है, इसको किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे by divide by 1000. So let's divide by 1000. So we have 0.3740, so on and so forth. Okay. Now what is time is equals to? Time is equals to distance upon speed. So we have the distance 0.3740 divided by speed, which is 4.6. So इसको हमने divide किया by 4.6. Okay. Now अब आपका calculator आपको आंसर दे रहा है 0.08131. ठीक है. And if you use the magic key in your calculator, if you guys remember वो जो magic key मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो मैजिक की के ज़रिए आप फिगर आउट कर सकते हैं द टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. ओके, सो इफ़ यू प्रेस द मैजिक की, ठीक है, एट दिस पॉइंट, सो व्हाट यू गेट 4 minutes and 52.74 seconds. तो ये हो जाएगा 4 minutes and 53 seconds. ओके, माइन टुक माई वाटर अवे फॉर नो रीज़न. ओके, अच्छा, दैट्स स्ट्रेंज. सो या, anyway, part D. Part D says a helicopter hovers vertically above farm B. Sine rule हम sine rule भी use कर सकते हैं. We have two angles and we have one non-included length, so we can use sine rule also. What is the magic key? The magic key is the key that you have just under the square root sign. So basically it's this key right over here. Let me see. Yeah, it's this key. ठीक है, ये आपको ना
टाइम में कन्वर्ट करके दे देता है इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. सो बेसिकली I've also made a video on it, you can check it out. So उस वीडियो का नाम क्या है? जस्ट राइट टाइम कैलकुलेटर, टाइम लिख के कैलकुलेटर लिख के सर्च करो, आ जाएगी. ठीक है. Okay, the helicopter hovers vertically above farm B. The angle of elevation of the helicopter from farm A is 10.7. Calculate the angle of elevation of the helicopter from farm C. Okay. So ये भी ज़रा एक लेंदी सवाल है. It's a 4-mark question. So yeah, the helicopter is above point B. Okay. So this is point B. Point B पे आपका एक helicopter है. So yeah, and the angle of elevation of the helicopter from point A is basically 10.7. So this is 10.7. Okay. So what is the distance from A to B? That's 950. Okay. With the help of this, what we can do is we can work out the height of the helicopter, how high the helicopter is. Okay. So क्या use करेंगे? हम use करेंगे tan. So tan of 10.7 is equals to BH upon 950. Cross multiply करो, tan of 10.7 bracket close into 950. So what do we get? We get BH is equals to 179.50. ठीक है. अब we're still not done with the question. Okay. We are still not done with the question. Now we have to find out the angle of elevation of the helicopter from farm C. So that means अब हम CB बनाएंगे. D पे हमारा helicopter आ जाएगा, which is 179.50, 179.50. Do we have CB? Yes, we do. That's 680. And angle of elevation chahiye, so that means this is the angle that we want, theta. So here's opposite, here's adjacent. वापस tan लगाएंगे. Tan theta is equals to 179.50 upon 680. Let's do tan inverse of 179.50 divided by 680. So what do we get? We get 14.787. Angles are always given correct to one decimal place. So 14.8 हो जाएगा. Okay. So basically हमने क्या किया? If you remember, कल we did a question where we converted 2D into 3D. Okay, that's what we did. We converted 2D into 3D. ठीक है. So think of it this way कि ये आपका, this is your horizontal ground, right? So horizontal ground पे आपका B पे helicopter है. ठीक है. And then imagine a 90-degree triangle being formed. ABH, helicopter का जो जहाँ पे helicopter है उसको हमने H कह दिया. Okay, so ABH is going to be a 90-degree angle and CBH is also going to be a 90-degree angle. Okay. Okay, question number 10, last question guys. Last question and then we're done. PQ. Okay, PQ length ज़रा निकाल के दें मुझे. Distance formula लगाएं and find out the length PQ. Hurry up. हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, बेसिकली देखो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो इंस्टेंटली द ट्रायंगल फॉर्म्ड हैज़ टू बी अ 90-degree triangle. Do I have a video on tan cos? No, I don't have a video on tan cos. Square root of 130. Okay, that better be the right answer because I'm not going to check. Okay. Square root of 130. Square root of 130, which is, कोई कह रहा है 10.6. What should I do? Should I take Arbeen's answer or trash food? जो भी है आपका answer. Okay, 10.6 seems to be more popular, so I'm going to go with 10.6. ठीक है. अच्छा, let me just root of 113, which is 10.6. Okay, so 5 minus 3, 8, 64.
64 plus 49 113 ठीक है सही है. अच्छा फिर इट सेज शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन L is 3y is equals to x plus 1. ठीक है. अच्छा अब आप इसकी इक्वेशन निकाल के भी शो कर सकते हैं. ठीक है. एंड यू नो व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन प्लग इन अ पॉइंट एंड शो कि वो उस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. सो लेट्स सी इक्वेशन निकाल, हम एक काम करते हैं इक्वेशन ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो लाइन हो सकता है किसी और पे भी लाई करे. सो -2 1 एक पॉइंट ले लेते हैं एंड 1 0 एक पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट. सो द ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 minus 0 over -2 minus 1. So 1 minus 0 is 1, -2 minus 1 is -3. So y is equals to -1/3x plus c. c के लिए let's plug in 1 comma 0. So 0 is equals to -1/3 times 1 plus c. तो c किसके बराबर हो जाएगा, c भी 1/3 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. So y is equals to -1/3x plus 1/3. So now we're looking at 3y is equals to -x plus 1. 3y is equals to 3y plus x is equals to 1. ठीक है. Okay, part C says line M is perpendicular to line L. So perpendicular से क्या याद आया ज़रा मुझे ये बताओ while I'm reading the rest of the question. And passes through point P. Okay, point P के क्या coordinates हैं ज़रा ये भी लिख लेते हैं. Point P के coordinates हैं -4 and -3. Okay, so what do you guys remember by the word perpendicular? नेगेटिव रेसिप्रोकल. यस. सो अगर इसका ग्रेडियंट 1/-3 है सो दैट मीन्स लाइन M जो है फॉर लाइन M द ग्रेडियंट वुड बी 3. ठीक है. सो y is equals to 3x plus c. In place of y plug in -3 because that's the point through which the line is passing. So -3 is equals to -12 plus c. c is equals to 9. And there you go, y is equals to 3x plus 9 is our final answer. And with this, हमारा alhamdulillah paper भी complete हो गया. ठीक है. So yeah. हाँ yeah, background में there is a dog barking. Anyway. So अब मुझे ये बताएं कि what do you guys prefer, paper or topic? Paper or topic? Easy paper था. How did you find -4 -3? I didn't find it, the question gave it. The question said कि it's passing through P. ठीक है. So basically दो चीज़ें हैं. Perpendicular so you're going to do negative reciprocal. ठीक है. And point जिसके coordinates हैं -4 -3. So you know gradient लिया, point लिया, put it all together, mix it up and you have your equation of a straight line. That's it. ओके सर वेरिएंट्स करना ज़रूरी है, प्लीज़ रिप्लाई. कर लो तो अच्छा है, रिसेंट ईयर्स के कर लो ताकि जो टॉपिक्स का ज़्यादा मटेरियल नहीं है 2018 ऑनवर्ड्स आप वेरिएंट्स कर लें. 2018 से पहले वेरिएंट्स जब करो जब यू लिटरली रन आउट ऑफ पास्ट पेपर्स. ठीक है. ओके नाइस चेयर, थैंक यू. टॉपिक्स आई थिंक टॉपिक की ज़्यादा डिमांड है नो. Kinematics. Okay, maybe we'll do a stream of kinematics. I think we have already done a stream of kinematics, no? नहीं किया हमने. चलो I'll run a poll on my Instagram. ठीक है. प्लीज़ ज़रा दोबारा से जवाब दे दीजिएगा और सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि मेजॉरिटी ने लास्ट टाइम पेपर बोला था, which is why we did paper. ठीक है. So चलें I'll stop here. I'll see you guys inshallah tomorrow. ठीक है. And yeah, that's it. Best of luck. Good luck to those जिनका मंडे को पेपर है अकाउंट्स का. ठीक है. Oh yeah guys, please before you go like the stream and do subscribe if you haven't. Do share also if you haven't with your classmates and friends. Sir make a video. अच्छा एक दफ़ा बता दो पढ़ लूँगा. Sir make a video of like P1 of the important topics and so. But I have made a video. I have made a video of the important topics of paper 2. अभी डाली है मैंने थोड़ी देर पहले. Check it out. Okay. एड मैथ्स वालों के लिए भी दुआ करें. एड मैथ्स की कल मैं इंशाल्लाह स्ट्रीम करूँगा. ठीक है. क्या स्ट्रीम करूँगा दैट आई हैवंट डिसाइडेड बट आई विल इंशाल्लाह स्ट्रीम समथिंग ओके रिलेटेड टू एड मैथ्स.
Okay. So 3 significant figures का बता दें. What about it? ओके अच्छा, मेरी आपको मशवरा ये है कि वो टॉपिक्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, काइनेमैटिक्स जो कि पेपर 1 में बिल्कुल भी नहीं आए ना, पहले ज़रा उनको पक्का कर लें. वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि वो टॉपिक्स आपने बहुत अपने पक्के कर लिए, 100% कर लिए, तो फिर आप बाकी टॉपिक्स पर फोकस करें. एंड द मेन टॉपिक्स ऑफ पेपर 2. ठीक है. लाइक आई सेड, वॉच द वीडियो दैट आई जस्ट मेड, इंपॉर्टेंट पेपर 2 टॉपिक्स. ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प होगी. ठीक है. Yes, you have to leave your answer correct to 3 significant figures. अच्छा, if you guys are still here, if you haven't left yet, तो I have found that email. मैं ज़रा फटाफट आप लोगों को दिखा देता हूँ. So basically, I wrote Cambridge an email and I asked them, क्योंकि ये हर साल डिबेट होती है कि आंसर करेक्ट टू 3 significant figures देने या नहीं देने. ठीक है. So this is the response I got. ठहरो मैं ज़रा उसको एयर ड्रॉप कर रहा हूँ. Yeah, okay. So basically, the response I got was this: as regards to the answer of the following guidance is given on the front cover of the question paper. Give non-exact answers correct to 3 significant figures or 1 decimal place per angle in degrees unless a different level of accuracy is specified in the question. Candidates' response are marked to the accuracy specified above. ठीक है. Although the mark scheme may provide answers to a greater degree of accuracy if this is considered beneficial to the interpretation of the scheme. ठीक है. तो marking scheme में greater degree of accuracy इसलिए provided होता है so that you can check your answer easily. Okay, not because that's what the final answer should be. So for example, अगर आपका आंसर आ रहा है 46.389, ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में पूरा 46.389 इसलिए दिया होता है so that you can check and make sure that you've done it correctly. लेकिन the final answer should be 46.4. ठीक है. Okay, so take care everyone. That's it. I hope this answers your question. So yeah. Allah Hafiz.